Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 24th and 25th of November. The session will be quite interesting. In this video, a total of 20 important news will be discussed of utmost importance, students. In this video, we will be talking about India's urban employment rate. Then we will be talking about Dr. Jitendra Singh has launched a grievance redressal assessment and index for 2023. Then AIM, that is Atal Innovation Mission, they have unveiled the 4th cohort of Community Innovator Fellows supported by Cape Gemini, India. Then we will be talking about World Economic Forum. Then we will be talking about Rio. They have partnered with Yes Bank and NPIC to launch a co-branded credit card, that is Rio launched UPI app also. Then next thing we will be talking about the second tranche of Palestinian Refugees Fund that has been provided by India. We will be discussing all these things in detail, so stay tuned till the end. Apart from this, students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe, as we are one-stop solution for current affairs. Also students, we upload daily current affairs video at 5 AM in the morning. We make sure to upload the weekly current affair, monthly current affair and topic wise on regular basis, so that it becomes easy for you to learn all the concepts on daily basis. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Now students, let's move to the national affairs, right? First thing first, we are talking about NSO, that is your National Statistical Office. This comes under the Ministry of Statistics and Program Implementation, and this is the organization that releases the Periodic Labor Force Survey. And this year it was the 24th edition of the Periodic Labor Force Survey that was released by National Statistical Office. Now, according to this Periodic Labor Force Survey, the unemployment rate in urban areas, correct, that are aged 15 years and above has decreased by 20 basis points, right? And it is now at 6.4%. Correct. This we are talking about for the second quarter of FY25, right? In the first quarter, it was 6.6%. So we can say a reduction of 20 basis points, that is 0.2%, has been seen in the unemployment rate in the urban areas for the people who are aged 15 years and above. Then this we are talking about is for the total, both male and female. If we talk about the unemployment rate among females that are aged 15 years and above in urban areas, it has also decreased marginally to 8.4%. That was earlier 8.6%. And this is the 5th consecutive quarter of the female unemployment rate that has been above 8%. If we are talking about males, their unemployment rate has also decreased in urban areas to 5.7% in the second quarter of FY25. Right, take a note of this. And if we talk about the youth unemployment rate, right, you can see the youth aged between 15 to 29 declined from 16.8% to 15.9% in the second quarter of FY24. Also, this Periodic Labor Force Survey showed that the unemployment rate for young females declined at a faster rate for young males as compared to that of young males in second quarter of FY25. In this only, remember one more data, we are talking about the salaried workers, right? So the number of salaried workers has also increased to 23.1% in the second quarter. That was 22% in the same quarter last year FY24, right?
And one more thing, remember, in this, Delhi, it has recorded the lowest unemployment rate in the country with 2.6% in the second quarter of FY25, followed by Gujarat, Karnataka, Punjab and Haryana. Moving on. Next is Minister of State Dr. Jitendra Singh has launched a grievance redressal assessment and index 2024. What is grievance redressal? Say for example any department, or we can say let's take an example of pensions, right? So if a pensioner who is receiving pension is having any problem regarding the pension amount, or if the amount is not being credited, if extra amount is being credited, or his pension has not started on time, right? So in these, he must be having some questions, he must be having some problems, he must be having some queries that he needs to clear it out. So a person will be set up by this Ministry of Pensions and Pensions Welfare, right? The person will be known as this, or the department that will be set up by the ministry will be known as Grievance Redressal Department, where they will be looking at these queries, these complaints, right, that will be coming from the customers, right? So in order for this, every organization, every ministry, they must have this grievance redressal portal or a website or a department where people can come and log their queries or complaints. So here recently, as you can see in the picture here, Union Minister of State Dr. Jitendra Singh, he have launched this grievance redressal assessment and index, that is GRAI, correct? It is for 2023. It was launched during a national workshop that was held on effective redressal of public services that was held at Vigyan Bhavan in New Delhi. This GRAI has assessed 89 central ministries and departments and has ranked them based on the comprehensive index in the dimensions of efficiency, feedback, domain, organizational commitment, corresponding to 11 indicators. While addressing the event, Union Minister of State Dr. Jitendra Singh highlighted a significant milestone in public grievance redressal and amounted that the average grievance resolution time, that means the average time under which the complaint of that person was solved, has reduced from 30 days to just 13 days, and soon it will be reduced further. Next, one more thing, remember, the first edition of this GRAI was launched in 2022, correct? Next, here you can see GRAI assessed 89 central ministries here. Next is AIM, that is your Atal Innovation Mission, right? This comes under Niti Aayog, and they have unveiled the 4th cohort of Community Innovators Fellows supported by Cape Gemini. Cape Gemini is an MNC, right? So Atal Innovation Mission of Niti Aayog, they have partnered with Cape Gemini India, and they have launched the 4th cohort of Community Investor Fellows support. The aim of this is basically to promote innovation, right? To promote research and development, and also to empower the local communities, local innovators, so that they can develop sustainable solutions for their communities. I repeat, Atal Innovation Mission of Niti Aayog, they have partnered with Cape Gemini India, and they have unveiled the 4th cohort of the Community Innovators Fellowship support, right? And this is basically why this was launched. This was launched in order to promote innovation, research and development, and to empower the local innovators so that they can develop sustainable solutions for the communities, right? If we talk about this cohort details, this program implemented by SRF Foundation in collaboration with Atal Innovation Mission, Cape Gemini, this includes 15 fellows hosted at Atal Community Innovation Center that will provide supportive environment for the innovators, right? Also, each fellow will receive here 1 lakh rupees from Cape Gemini India to scale their innovation. Also, this program includes 1 year intensive training with mentors like Life Skill, United Nations Sustainable Development Goals, and various entrepreneurs so that their entrepreneurship can help. Next is in international affairs. AM Green Kakinda cluster has joined the World Economic Forum's Transitioning Industrial Cluster initiative.
What is this AM Green Kakinda cluster? Right, this is based in Andhra Pradesh, right? And this is the world's first zero emission cluster. World's first zero emission cluster. Where is this located? It is in Andhra Pradesh, right? They have recently joined World Economic Forum's Transitioning Industrial Cluster Initiative that will promote what? That will promote jobs. That will promote economic growth. That will promote various projects that will be aiming to reduce the carbon dioxide emission, right? And I repeat, it is AM Green Kakinda cluster that have joined World Economic Forum for Transitioning Industrial Cluster Initiative that is aimed at developing jobs, creating economic or basically creating economic growth, and also to reduce the carbon dioxide emissions. Correct? Take a note of this, important. Here you can see one more thing. The AM Green Ammonia Private Limited, this is a company under Greenco Group, is developing one of the world's largest green ammonia plant at Kakinda, Andhra Pradesh. Right? This will also provide development, and also you will be seeing various industries and governments they will be benefited from the sustainable practice here. Then it will also drive economic growth. Also, one more thing, remember this AM Green Kakinda cluster, right? It represents an investment of over more than $3 billion that is projected to generate 10,000 plus direct and indirect jobs. This operation will begin in 2026 with zero projected carbon dioxide emission. Important. If we talk about World Economic Forum, who is the president of World Economic Forum? Borge Brand. Where is the headquarters of World Economic Forum? It is in Geneva, Switzerland, and it was established in 1971. Next is banking and finance. Rio has partnered with Yes Bank and NPIC to launch co-branded credit card with Rio or with co-branded credit card, as well as they have launched a UPI application for the same. This is not NPIC, it is NPCI, right? So Rio, correct? Rio, remember, it is Rio Money, right? This is a Bengaluru, Karnataka based fintech startup, and they have partnered with whom? They have partnered with Yes Bank. And what they have launched? So Rio Money and NPCI, they together, or Rio Money and NPCI together with Yes Bank, they have launched this Yes Bank Rio Rupee credit card. Correct? Take a note of this. And remember, apart from this, as I mentioned, Rio Money, they have also launched their own mobile application. You will be seeing that this card is available to the individuals who are aged above between 21 to 60 years of age with a minimum net salary of 25,000 rupees. And also you will be seeing various more than 100 million merchant locations across India where you can be using this. Correct? Then if we talk about Yes Bank, who is the Managing Director and Chief Executive Officer of Yes Bank? Prashant Kumar, headquarter of which is in Mumbai, Maharashtra. And for NPCI, National Payment Corporation of India, who is MD and CEO? Dilip SB, headquartered in Mumbai, Maharashtra. Next is Government of India. They have released the second tranche. Second tranche means, what does this second tranche means? That second installment in simple terms of $2.5 million that was released for United Nations Relief and Works Agencies for Palestinian refugees in the Near East, right? So this amount has been released by Government of India. It is the second tranche of this amount, right? First tranche was also, or we can say the first installment was also of $2.5 million. So we can say the Government of India has aimed to contribute $5 million to UNRWA, that is United Nations Relief and Works Agency. This will be for the Palestinian refugees and it will be for the year FY25. Here India is contributing to support the welfare of the Palestinian refugees. Apart from this, we'll look at the total because 5 million is for FY25. So as of, we can say, over the few years, India has contributed more than $40 million to the cause. Correct? That included education, healthcare, social service for the Palestinian refugees.
Apart from this, in October 2024, our country also supplied 30 tons of essential medicines, including life-saving and anti-cancer drugs to address the healthcare needs. Next is GenWise. They have launched a UPI payments for senior citizens with secure interface. So directly remember, a UPI payment solution, that is GenWise UPI, has been launched for seniors, elderly population, and it is in collaboration with Axis Bank. The organization is GenWise India. Next is Profectus Capital. They have raised $25 million via NCDs to IFC. What is this NCDs? These are your non-convertible debentures. So Profectus Capital Private Limited, that is an NBFC, they focused on MSMEs and they have raised $25 million, that is close to 205 crore rupees, through the issuance of these NCDs to IFC, that is a member of World Bank. Right, this is IFC's first investment in financing the energy efficient machineries for the MSMEs in India. So with this amount, the MSMEs in India will be benefiting a lot. Next, Northern Arc, they have secured $65 million for Climate Impact Fund. I repeat, Northern Arc, that is a leading NBFC, they have announced $65 million from global development banks for the inaugural climate fund that will be managed through its fund management arm, that is Northern Arc Investment Indian Financial System Code Trust. This climate fund has received $50 million commitment from United Nations International Development Finance Corporation and additional of $15 million from OEEB, the Development Bank of Republic of Australia. Next is Cash Free. They have launched a pilot. Pilot means on trial basis for cross-border payments and global transaction. So Cash Free Payment India Limited, Indian leading fintech company, they launched a pilot project for cross-border payments. That means payment between India and other country, right? That will be partnershiping with various food tech, Swiggy, right? Zepto, Nature's Basket, right? Nykaa, Book My Show, and multi other companies. Right, this pilot program will be benefiting the users of UPI and RuPay credit and debit card, right, that are not typically recognized for global transaction. One more thing, remember, Cash Free, they have also received the payment aggregator cross-border license. Right, next is economy and business. So Indian economy likely to grow at 6.7% in FY25 due to weaker second quarter performance as per the data released by Morgan Stanley. Right, so Morgan Stanley, they have released the 2025 India economy's outlook, and they have revised the India's GDP forecast to how much? 6.7% for FY25. Earlier they were projecting that India will be growing by 7%, but a 30 basis point reduction has been seen here. Apart from this, they are also projecting that for FY26 and FY27, for both the years, India will be growing close to 6.5%. Right. Also remember, if we talk about the inflation in India, you can see the retail inflation is close to 4.3%, will be close to 4.3% in FY26. And as of now, we are seeing in November, we are seeing the highest ever inflation. Can you tell me the number? This is your homework, let me know. But I can tell you the food inflation in India is on the rise, and we are seeing 10% plus rise in the food inflation. That is very high. Next is awards and recognitions. Jane Figueiredo and Vitaly Petrov, as you can see them in the picture. Jane Figueiredo and Vitaly Petrov, they were honored with IOC Coaches Lifetime Achievement Award 2024. What is IOC? IOC is your International Olympic Committee, right? And also remember, we discussed this yesterday, that our India is hosting, or India has given a bid to host the 2036 Olympic Games. Coming back, Jane Figueiredo and Vitaly Petrov, they were honored with the IOC, International Olympic Committee's Coach Lifetime Achievement Award for 2024. Right, they have been recognized for their long-standing dedication to their respective sports and athletics they coach. Correct? Take a note of this. This award, Coaches Lifetime Achievement Award, this was initiated when? It was initiated in 2017. Next is one more thing you remember, right? If we talk about Jane here, she is related to what? Right, means she is related to which sports?
So she is related to aquatics, right? And Vitaly, he is related to what? He is related to pole vaulting. Next is 24 coastal villages in the state of Odisha were recognized as tsunami ready by IOC of UNESCO. I repeat, recently, if we are talking about Odisha, right? Where is Odisha? Odisha is located here, right? And we know there is a high chance of tsunami. The climate change is taking place, right? The ices are, the glaciers are melting, and we can see a rise in the, or we are seeing a rise in the ocean levels also, right? But if there is a thunderstorm, or if there is any storm in the Indian Ocean region or Bay of Bengal, right? Because if here there is a storm, then it is a high chance that tsunami can reach Odisha. Correct. So in the 24 coastal villages that are located on the coastal area of Odisha across 6 districts, they have been recently declared, or they have been recently recognized as tsunami ready by Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO. Right. This tsunami ready recognition certificate was presented during the 2nd Global Tsunami Symposium that was held in Indonesia on 11th of November. Right. And you can see the 2nd Global Tsunami Symposium. The villages are, these are that has been in these areas. Right. So these 24 coastal villages have been declared what? They have been declared tsunami ready. That means if there is a tsunami in future, then we are ready for that disaster, or we are ready and we have prepared everything for that, and we'll make sure that there is least destruction and there is a least death of people because of tsunami. Moving on, next is appointments and resignations. Somaliland elected Dr. Abdirahman Mohammed Abdullahi, I repeat, Dr. Abdirahman Mohammed Abdullahi as the new president of Somaliland. Correct. He will be the 6th president of Somaliland. Correct. Take a note of this. Direct question. Moving on. Next is important days. Women's Entrepreneurship Day observed on 19th of November, and this day is observed basically to create awareness about the women entrepreneurship, the challenges they have to face, and their contribution to the Indian economy. This year it was the 11th anniversary of this day that was observed, and this day is annually observed by World Entrepreneurship Women Entrepreneurship Day organization, that is an NGO. Then the first ever edition of this was observed in 2014. Next is, as you can see, the theme here also, or the campaign, that is #Women campaign in 2023 that was launched. Next is World Children's Day observed on 20th of November. This day is observed basically to create awareness about the children's worldwide and how we can help them to grow in their life, their welfare, their education, their health and everything. This day is observed on 20th of November, observed by United Nations, or this day is observed by UNICEF to be precise. Correct. Then next thing, remember there is a theme being listen to the future. This is the theme here. Moving on, next is Africa Industrialization Day observed on 20th of November. This day is observed basically to create awareness about the importance of industry of Africa's industrialization and the challenges that are faced by this continent, right? The apartheid that they saw, right? The climate issues that we are seeing, the poverty, the hunger that we are seeing in their area, still their industries are booming, right? So Africa Industrialization Day observed on 20th of November, and this year it was the 35th edition of the Africa Industrialization Day. You can also the theme here, this is the theme here for Africa Industrialization Day for 2024. Next, students, we are talking about state news. Guru Ghasidas Temor Pingla, right? It has been notified as the India's 56th Tiger Reserve, and we discussed this few days back also that will be the 56th Tiger Reserve of India. It will be Guru Ghasidas Temor Pingla, right? And where it is located? It is located in the state of Chhattisgarh. Correct. And Union Minister of Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav has notified that Guru Ghasidas Temor Pingla will be the 56th Tiger Reserve of India, and this new reserve becomes the 3rd largest Tiger Reserve after Manas Tiger Reserve that is located in Assam, and Nagarjun Shri Salam Tiger Reserve that is located in
Andhra Pradesh. So this question can be also asked that which is the largest tiger reserve in India? It is the Manas Tiger Reserve. Correct. And which is the third largest that has been recently declared? It is Guru Ghasidas Tiger Reserve located in Chhattisgarh. Who is the Chief Minister of Chhattisgarh? Vishnu Dio Sai. Governor Ramendeka, headquarter Raipur. Moving on, next is Madhya Pradesh and Rajasthan. They have formed a joint panel committee for Cheetah project. Right? I repeat, Madhya Pradesh state and the government of Rajasthan, they formed a 10-member joint corridor management committee, right, where these two states will be working together in order to look at the incidence of cheetahs from Madhya Pradesh straying into neighboring Rajasthan. This aims to create and manage cheetah corridor between the two states, guaranteeing the safe movement of the cheetahs between these two states. Right? So take a note of this. In Madhya Pradesh, it is Kuno National Park and it is Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. Right? They will be taking place here and we will be seeing a smooth transition between them. If you remember, in 2022, 8 cheetahs were brought to India from Namibia, right? And they were located where? They were located here only in Kuno National Park. Next is Karnataka. They have celebrated Bali Padiyami, right? This is a festival that was observed on the 4th day of Deepavali, which commemorated the return of Asura king Bali Chakravarti. Correct? And here, as per the boon granted to him by Lord Vishnu during the Vamana avatar. So just remember, Bali Padayami is celebrated where? In Karnataka. And this year it was celebrated on 2nd of November. So that's all for the day, students. Now let's move to quick one-liner revision. Periodic Labour Force Survey was released by NSO and India's urban unemployment rate has declined to 6.4% in the second quarter of FY25. Then Dr. Jitendra Singh has launched Grievance Redressal Assessment and Index 2023. Then Atal Innovation Mission of Niti Aayog, they have unveiled the 4th cohort of Community Innovators Fellowship supported by Cape Gemini, India. Then AM Green Kakinda Cluster that is located in Andhra Pradesh has joined the World Economic Forum's Transitioning Industrial Cluster Initiative. Then Rio Money, this is a fintech company based out of Bangalore, Karnataka. They have partnered with Yes Bank and NCPI. I also got confused. National Payment NPCI. National Payment Corporation of India, right? So Rio Money, they partnered with Yes Bank and NPCI to launch co-branded credit card, right? And they have also launched a UPI application for the same. Then Government of India, they have released the second tranche of $2.5 million, right? The first tranche was also of $2.5 million that will be helping the Palestinian refugees. Next, Genwise, they have launched UPI payments for senior citizens with secure interface. Then Profectus Capital, they have raised $25 million via non-convertible debentures to IFC. This will be helping the MSMEs to grow. Then Northern Arc, they have secured $65 million for Climate Impact Fund. Then Cashfree, they have launched the pilot for cross-border payments and global transactions. Then Indian economy likely to grow at 6.7% in the FY25 due to weaker quarter second performance according to Morgan Stanley. Then Jane Fugredo and Vitaly Petrov, they were honored with the IOC Kochi's Lifetime Achievement Award 2024. Next is 24 coastal villages in Odisha were recognized as tsunami ready by IOC of UNESCO. Then Somaliland elected Dr. Abdirahman Mohammad Abdullahi as the new president. Then Women Entrepreneurship Day on 19th of November, World Children's Day on 20th of November, Africa Industrialization Day on 20th of November. Then if we talk about state news, then Guru Ghasidas Temur Pingla Tiger Reserve, this Guru Ghasidas Temur Pingla, it has been recognized as the 56th Tiger Reserve of India and this is the third largest tiger reserve now of India. Then Madhya Pradesh and Rajasthan, they have formed a joint panel committee for Cheetah project which will ensure the safe travel of cheetahs between between Madhya Pradesh and Rajasthan and also to make them that these cheetahs are secure. Then Karnataka celebrated Bali Padiyami festival. So these were your important current affairs, students. Now let's move to some quick revision part that will be beneficial in your learning and as well as your competitive exams. Who has recently won the National Chess Championship held in Gurugram, Haryana? So Karthik Venkataraman, right? He has won the National Chess Championship that was held in Gurugram,
Haryana. And Grandmaster Ganguly Surya Shekhar finished second, while International Grandmaster Nilash Shah finished third. Next is name the football club team that recently won their maiden Durand Cup at the 133rd Indian Oil Durand Cup held in Kolkata, West Bengal. This Durand Cup is related to which sport? It is related to football, right? And which football club has won their maiden, that is their first ever victory in the Durand Cup? It is Northeast United Football Club. This time it was the 133rd edition of the Durand Cup sponsored by Indian Oil. Next, who has recently won the men's singles title at the US Open 2024? So, Jannik Sinner, right? Jannik Sinner has won the men's single title at the US Open 2024. Take a note of this, important. And who won the women's singles title here? It was won by Aryna Sabalenka. Next, name the England cricketer who has recently announced his retirement from international cricket. So, Moeen Ali. Right, he is an international cricketer from England who recently announced retirement. Next, India won dash medals in the Paris 2024 Paralympic Games and ranked 18th among 170 participating nations. So, India won a total of 29 medals in the Paris 2024 Paralympic Games and has ranked 18th among the 170 participating nations. From these 29 medals, 7 were gold, 9 silver, and 13 bronze, and India ranked at 18th position here. Next, the Olympic Council of Asia has recently included Yogasana as the demonstration sport in the 2026 Asian Games, which scheduled to be held where? So, these 2026 Asian Games are scheduled to be held where? It is in Japan. Correct? Take a note of this. Next, who has recently won the F1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix? So, who won the Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix? Oscar Piastri, right? And Ferrari's Charles Leclerc was on the second position, and Mercedes George Russell was on the third position. Next is which javelin thrower has finished second with a throw of 87.86 meters at the 2024 Wanda Diamond League Finals in Brussels, Belgium? So, who finished second here? And very famous Indian javelin thrower Neeraj Chopra finished second here. Next, who has recently won the F1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2024 held at the Marina Bay Street Circuit in Singapore? So, Lando Norris, right? He has won the Singapore Airlines Grand Prix. Correct? Take a note of this. Then on Lando Norris, he drives for McLaren and he's a British racer. Then Max Verstappen, who drives for Red Bull, was on the second position, and Oscar Piastri was at the third. Next, which country recently won the gold medal in both the Open and Women's section of the 45th International Chess Federation Chess Olympiad in Hungary, Budapest? So, India has recently won the gold medal in both Open and Women's section here. Next, where was the 7th edition of the annual men's tennis tournament Lever Cup 2024 held? So, Lever Cup is related to which sport? Is related to tennis, and it was the 7th edition of the annual men's tennis tournament Lever Cup. It was held in Berlin, Germany. Correct? And this Lever Cup is played between Team Europe and Team World. Can you tell me this time who won from them? Comment below. This is your homework. Next, which country has recently won the 4th Intercontinental Cup 2024 football title by defeating India by 3-0 at Gandhi Mohana Chandra Balayogi Athletic Stadium in Hyderabad, Telangana? So, which country has won the 4th Intercontinental Cup 2024 football? It was won by Syria. This cup is held between Syria, India and Mauritius. Right? The 4th edition of Intercontinental Cup. Next, which brand is the official sponsor of FIFA Women's World Cup 2027 that will be held in Brazil? So, Lay's, the very famous chips brand, it is the sponsor for the FIFA's Women World Cup scheduled to be held in 2027 in Brazil. Next, name the Indian tennis player who recently won the men's double title along with Vijay Sundar Prashant in the finals of Association of Tennis Professionals 250 Hangzhou Open 2024. So, who is that tennis player? Jeevan, right? He won the men's double title along with Vijay Sundar Prashant here. Next, which country has recently won the gold medal in the first Asia Pacific Paddle Cup in Bali, Indonesia?
So it is Indonesia country that has won the gold medal in the first edition of the Asia Pacific Paddle Cup scheduled to be held in Bali, Indonesia. Next, which city will host the 2026 Commonwealth Games? So it is Glasgow, Scotland that will host the 2026 Commonwealth Games. They will be the 23rd edition of the games. And can you tell me the name of sports that have been removed from this 23rd edition of Commonwealth Games scheduled to be held in Scotland, Glasgow in 2026? Next, students, let's move to the homework section. First question that I want to ask you is, tell me recently where sandstone replicas of Clerk wheel were installed. Right? I repeat, sandstone replicas of the Clerk wheel were recently installed. Second, which organization recently released Global TB report? And third, tell me in which country have enhanced their currency cooperation? Right? India has recently enhanced their currency cooperation with which country? Correct? So these are your 3 homework questions, students. If you find the session interesting, do hit the like button. Now students, let's move to the Hindi segment of this video. हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24 एंड 25 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 20 इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे इंडिया की अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में। देन हम बात करेंगे ग्रीवियंस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स को भी रिलीज किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। देन हम बात करेंगे 4th कोहॉर्ट ऑफ कम्युनिटी इनोवेटर्स फेलो जो प्रमोट किया गया अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग एंड केप जेमिनी के द्वारा मिलके। देन हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। देन हम बात करेंगे एक यूपीआई ऐप एंड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। देन इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकेंड ट्रांच यहाँ पे लॉन्च करी है $2.5 मिलियन की, किसके लिए, जो किसको हेल्प करेगी। इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आने वाले टाइम में आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसी के अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। एंड हम डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करते हैं सुबह 5 बजे, जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है। सुबह 5 बजे वीडियो डल जाती है, तो जल्द से जल्द बच्चों उठो और पढ़ना स्टार्ट कर दिया करो, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए लॉन्ग टर्म में। इसी के अलावा हम वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज वीडियो रेगुलरली अपलोड करते हैं, जो कि आपकी लर्निंग में काफी हेल्प करेगी। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेशनल अफेयर्स पर। हम बात करेंगे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की। ये हमें बताती है कि लेबर का हमारी एम्प्लॉयमेंट, हमारी वर्ल्ड की, इंडिया की इकोनॉमी में कितना पार्टिसिपेशन है। ये डाटा रिलीज किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। एंड इस बार हमने 24वां पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यहाँ पे रिलीज किया एनएसओ के द्वारा। ये रिपोर्ट बताता है कि जो इंडिया का अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब अर्बन एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसमें हमें गिरावट देखी। पहले ये था 6.6% फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY25, राइट, लेकिन 6.6 था इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25, वही घटकर अब हो गया 6.4% इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY25। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 0.2% की, या फिर हम बोले 20 बेसिस पॉइंट की यहाँ पर हमें रिडक्शन देखने को मिली है। यहीं पे अगर हम बात करें जो मेल्स की है, राइट, ये तो था टोटल की, राइट। अगर हम मेल्स की बात करें तो 5.7% का देखा हमने अनएम्प्लॉयमेंट सेकंड क्वार्टर में। वहीं पे फीमेल्स की बात करें तो 8.4% की यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें देखने को
मिला। इसी के अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, एक और चीज जरा बताओ, अगर यूथ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो 15 से 29 की एज में आते हैं उनको यूथ कंसिडर करते हैं। उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो डिक्लाइन था टू फ्रॉम 16.8 टू 15.9% इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY25। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राइट, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन है। इनके द्वारा लॉन्च किया गया ग्रीवियंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स को। देखो ये ग्रीवियंस रिड्रेसल बेसिकली क्या है कि मान लो पेंशनर है कोई, उनकी पेंशन टाइम पे नहीं आ रही है, या फिर उनकी पेंशन स्टार्ट होनी थी वो स्टार्ट नहीं हुई है, या फिर कहीं अमाउंट कम आ रहा है, ज़्यादा अमाउंट कट रहा है, करेक्ट। तो ऐसे केसेस में जो पेंशनर्स होते हैं वो अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं एंड उनको यहाँ पर उनकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने का ये पेंशन या फिर ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल भी होता है, इसकी वेबसाइट भी होती है, एक डिपार्टमेंट होता है पूरा। तो उनके यहाँ पे प्रॉब्लम्स को, जो कंप्लेंट्स है उनको जल्द से जल्द सॉल्व करने का ये काम करेगा, राइट। यहीं पे इन्होंने इवन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि जो पहले कंप्लेंट्स 30 दिनों में सॉल्व होती थी वही जाकर अब 13 दिनों के अंदर सॉल्व होने लग गई हैं एंड और टारगेट किया जाएगा कि इसको और जल्द से जल्द हम सॉल्व कर सकें। तो इनके द्वारा भी क्या रिलीज किया गया है, GRAI क्या है, ग्रीवियंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स को 2023 के लिए लॉन्च किया गया है। ये एक वर्कशॉप के दौरान लॉन्च किया गया था, इफेक्टिव रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, जो कि विज्ञान भवन में हुआ था न्यू दिल्ली। यहाँ पे 89 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स को रैंक किया गया बेस्ड ऑन देयर कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स, राइट, उनकी एफिशिएंसी, उनके फीडबैक, डोमेन, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट एंड 11 ऐसे फैक्टर्स पे बेसिस पे उनको यहाँ पे लिस्ट किया गया। चलिए फिर यहाँ पे अगर हम बात करें GRAI की, करेक्ट, इसको पहले कब लॉन्च किया गया था, जो पहला एडिशन था, तो पहला एडिशन 2022 में लॉन्च किया गया था और ये इसका सेकेंड एडिशन रहेगा। चलिए यहीं पे इस इंडेक्स में अगर हम बात करें तो मार्क करके चलेंगे, टॉप किसने किया, राइट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, राइट, इन्होंने यहाँ पे टॉप किया, राइट, फॉलोड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन सेकेंड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन थर्ड पर आ जाती है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अटल इनोवेशन मिशन, राइट, ये नीति आयोग का आर्म है। इनके द्वारा अभी 4th कोहॉर्ट ऑफ कम्युनिटी इनोवेटर्स फेलोज को सपोर्ट किया गया बाय केप जेमिनी जी, मतलब नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन एंड केप जेमिनी ऑफ इंडिया, इन्होंने यहाँ पे पार्टनर किया ताकि 4th कोहॉर्ट ऑफ कम्युनिटी इनोवेटर्स फेलोज को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। ये CIFS ये है क्या, बेसिकली यहाँ पर हम रिसर्च के ऊपर बात करेंगे, डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे, इनोवेशन के ऊपर बात करेंगे, कहाँ पर, स्पेशली इन द लोकल इनोवेटर्स के लिए, राइट, ताकि जो लोकल इनोवेटर्स हैं, राइट, उनको हम एम्पावर कर सकें, उनको हम ट्रेन कर सकें, उनको हम हेल्प कर सकें ताकि अपनी कम्युनिटीज़ के लिए एक सस्टेनेबल वो सॉल्यूशन बना सकें। यहीं पर हम देखेंगे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, SRF फाउंडेशन के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद एम अटल इनोवेशन मिशन एंड केप जेमिनी। एंड यहाँ पे 15 फेलोज होस्टेड किए जाएंगे, कहाँ पर, अटल कम्युनिटी इनोवेटर सेंटर में, राइट, ताकि एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बनाया जा सके, करेक्ट। एंड यहीं पे हम देखेंगे 1 साल तक की ट्रेनिंग यहाँ पे इन्हें प्रोवाइड की जाएगी इन एंटरप्रेन्योर्स को, स्किल्स पे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, राइट, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। देन हर फेलो को यहाँ पे 1 लाख रुपए तक का ग्रांट भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो वो उनका बिजनेस है, जो वो अपना इनोवेशन है, उसको आगे स्केल कर सके। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर। AM ग्रीन कैकिंडा क्लस्टर, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, राइट। इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया है एंड ये वर्ल्ड का पहला जीरो एमिशन क्लस्टर बनेगा, वर्ल्ड का पहला जीरो एमिशन ये क्लस्टर है, जो कहाँ पर है, ये आपका है आंध्र प्रदेश में, राइट। एंड इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। इससे क्या होगा, ये जो इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव ज्वाइन किया, इससे होगा क्या, जॉब्स क्रिएट होंगी, इससे होगा क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। इससे होगा क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है ना, उस पे यहाँ पर कंप्लीटली रोक लगा दिया जाएगा एंड इसको एक एग्जांपल के तौर पे इंडिया में लाया जाएगा कि क्यों, अगर ये क्लस्टर ऐसा कर सकता है तो क्योंकि बाकी क्लस्टर क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। यहीं पर हम देखेंगे तो ये AM ग्रीन काकिंडा क्लस्टर आंध्र प्रदेश में है। 3 बिलियन से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लग चुकी है, 10,000 से भी ज़्यादा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स यहाँ पे जनरेट करने का काम किया जा रहा है एंड ये ऑपरेशन 2026 में बिगिन होगा, जो हम देखेंगे कि जीरो प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस यहाँ पर रहेंगे।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? बॉर्ज ब्रांड। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। तो रियो मनी ये एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है, बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड। इन्होंने यस बैंक एंड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ यहाँ पे पार्टनर किया ताकि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, राइट, यूपीआई एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो ये दोनों चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है। अगर मैं यस बैंक की बात करूं तो यस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? दिलीप एसबे। एनपीसीआई की बात करूं, सॉरी आई करेक्ट माई सेल्फ, यस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। एनपीसीआई के एमडी एंड सीई हैं दिलीप एसबे। नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी सेकेंड ट्रांच मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट अपनी रिलीज कर दी है ऑफ $2.5 मिलियन की। ये कहाँ पे गई है अमाउंट? ये यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, राइट, इनको ये सेकंड ट्रांच दी गई है। एंड ये अमाउंट कहाँ पे यूज होगी? पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के वेलफेयर के लिए ये अमाउंट यूज की जाएगी। ये सेकंड ट्रांच है इस साल की। इससे पहले जो पहली ट्रांच थी वो भी $2.5 मिलियन की थी। मतलब अभी तक इंडिया ने इस साल $5 मिलियन कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को, ताकि जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज है उनके वेलफेयर के ऊपर काम किया जा सके, उनकी एजुकेशन, उनका हेल्थ केयर, उनकी सोशल सर्विस के ऊपर यहाँ पे काम किया जा सके। ये तो था इस साल का। लेकिन अगर पिछले कुछ साल का देखें तो इंडिया ने 30 टन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन भी सप्लाई किए हैं। एंड पिछले कुछ सालों में $40 मिलियन से भी ज्यादा ये हम यहाँ पे डोनेट कर चुके हैं या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर चुके हैं यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को, ताकि पैलेस्टीनियन के जो रेफ्यूजीज हैं उनकी हेल्प की जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं जनवाइज। इनके द्वारा लॉन्च किया गया यूपीआई पेमेंट फॉर सीनियर सिटीजन्स विद सिक्योर इंटरफेस। एक्सिस बैंक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करके कोलैबोरेट करके लॉन्च किया। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोफेक्टस कैपिटल। इन्होंने $25 मिलियन यहाँ पे रेज किए हैं वाया नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स टू आईएफसीज। एंड ये जो पैसा रेज किया गया है ना, ये आपके एमएसएमईज को ग्रो करने की में हेल्प करेगा। हम जानते हैं इंडिया में एमएसएमईज के ऊपर गवर्नमेंट बहुत इन्वेस्ट कर रही है, हम इसको सेक्टर को ग्रो करना चाहते हैं एंड इसीलिए यहाँ पे ये पैसा रेज किया गया है थ्रू एनसीडीज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉर्दर्न आर्क। इन्होंने सिक्योर किया $65 मिलियन फॉर क्लाइमेट इंपैक्ट फंड। क्लाइमेट के लिए $65 मिलियन यहाँ पे रेज किए गए नॉर्दर्न आर्क के द्वारा। डायरेक्ट है, याद रखेंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि जो क्रॉस बॉर्डर एंड ग्लोबल ट्रांजैक्शंस होती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री की कंपनियों में, उसको इजी बनाया जा सके। उसके ऊपर ये कैश फ्री पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, राइट। पायलट मतलब ट्रायल बेसिस पे ये रहेगा, जिससे यहाँ पे हम देखेंगे इन्होंने स्विगी के साथ, जेप्टो के साथ, नेचर्स बास्केट, नाइका, बुक माई शो, इन सब के साथ यहाँ पे पार्टनर किया है, करेक्ट, ताकि ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के ऊपर काम कर सके। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस। इंडियन इकोनॉमी लाइकली टू ग्रो बाय 6.7% इन FY25 ड्यू टू वीकर सेकंड क्वार्टर परफॉर्मेंस एज पर मॉर्गन स्टैनली। देखो, मॉर्गन स्टैनली ने पहले प्रोजेक्ट किया था कि इंडिया 7% से ग्रो करेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स अब इन्होंने अपना जो प्रोजेक्शन है 30 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस कर दिया है टू 6.7%। एक और चीज यहीं पे याद रखेंगे, राइट, इन्होंने ही बोला कि FY26 एंड FY27 में भी इंडिया का प्रोजेक्शन रहेगा कि ये 6.5% से यहाँ पे ग्रो करते हुए हमें देखेंगे। इन्फ्लेशन की बात करें तो इस महीने सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है, ये आपका होमवर्क है, नीचे मुझे कमेंट करके बताओ, आपको पता होना चाहिए। एक और चीज जो फूड इन्फ्लेशन है 10% से भी ज्यादा हमें देखने को मिली है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के ऊपर। हम बात करेंगे IOC। IOC क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, राइट। ये छठा इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया भी इन दोनों कोचेज को। ये कौन है? जेन फिगरेडो एंड विटेली पेट्रोव, राइट। इन दोनों को यहाँ पे इससे ऑनर किया गया 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, राइट। इनकी जो डेडिकेशन है, राइट, अपने रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स में कि एथलीट्स को ट्रेन करना, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया है। ये अवार्ड 2017 से चलता हुआ आ रहा है और इस बार इसका छठा एडिशन था। अगर बात करूं मैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बक। एंड हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा इसका? लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड में। 1894 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था।
इसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा स्टेट में अभी 24 कोस्टल विलेजेस को इन 6 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया गया है। देखो सुनामी रीजन क्या होता है, कहीं स्टॉर्म आ गया बे ऑफ बंगाल में, राइट, यहाँ पे कोई तूफान आ गया, थंडर स्टॉर्म आ गया, इससे क्या होता है हाई चांस होते हैं कि यहाँ पे सुनामी आ जाए। तो अभी यूनेस्को की IOC इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ने, ये यूनेस्को की है, इनके द्वारा यहाँ पे डिक्लेयर किया गया कि ओडिशा की ये जो कोस्टल एरियाज है ना, इनको सुनामी रेडी कर दिया गया कि अगर सुनामी भी आती है तो यहाँ पे ओडिशा में बहुत कम डेंजर होगा, बहुत कम डिस्ट्रक्शन होगी, बहुत कम माल हानि नुकसान होता हुआ हमें बहुत कम दिखेगा, राइट। एंड इनको सेकेंड ग्लोबल सुनामी सिंपोजियम जो कि इंडोनेशिया में हुआ 11 नवंबर को हुआ, उसके दौरान इनको यहाँ पे ये सुनामी रेडी सर्टिफिकेशन से प्रेजेंट किया गया, किसके द्वारा, यूनेस्को की IOC के द्वारा। एंड 24 कोस्टल विलेजेस कहाँ की, ओडिशा की, ठीक है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के ऊपर। तो सोमालीलैंड ने अभी इलेक्ट किया डॉक्टर अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही को, आप इनको यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। ये नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए हैं एंड ये 6ठे प्रेसिडेंट रहेंगे सोमालीलैंड के। नेक्स्ट आ जाते हैं इनके बाद इंपॉर्टेंट डेज पर। वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे ऑब्जर्व किया जाता है 19 नवंबर को, ताकि वीमेन को हम प्रमोट कर सकें एज द एंटरप्रेन्योर, उनकी हेल्प कर सकें उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एंड उनका जो हमारे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, राइट, उसको भी यहाँ पे प्रमोट करने का ये काम करता है डे। 11वीं एनिवर्सरी हमने, या फिर हम बोले 11वां एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया 19 नवंबर को। वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि एक NGO है, राइट, और पहली बार इसको 2014 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, 20 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। चिल्ड्रंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, उनकी हेल्थ केयर के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, राइट, एंड यही हमारा फ्यूचर है, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। यूनिसेफ के द्वारा ये डे ऑब्जर्व किया जाता है एंड इसकी एक थीम रहेगी। थीम क्या है, लिसन टू द फ्यूचर। थीम क्या है, लिसन टू द फ्यूचर, ये यहाँ पे थीम रहेगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे। अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे 20 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इस डे का मेन एम क्या है कि अफ्रीका में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना, राइट, क्योंकि हमने देखा है कि अफ्रीका में जो लोग हैं, राइट, जो ब्लैक पीपल है, उनके खिलाफ काफ़ी अपार्थाइड भी हमने देखा था, राइट, जो उनके खिलाफ हमें इतने प्रॉब्लम्स देखी थी अर्ली 2090s में, लेट 90s में, अर्ली 20s में, राइट, अपार्थाइड उनके खिलाफ हुआ था, राइट। तो इनके खिलाफ इन्होंने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं। स्टिल अफ्रीका एक इंडस्ट्री बनी हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है। आप देखते हैं इंडिया से भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो इस बार हमने 35वां एडिशन ऑब्जर्व किया था अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे का। इसकी एक थीम भी याद रखेंगे, ये आप यहाँ पे थीम देख सकते हैं इस डे की, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज़ के ऊपर। हम बात करेंगे गुरु घसीदास टमोर पिंगला, राइट, इसको भी डिक्लेयर किया गया 56वां टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है एंड अब ये 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व भी बन गया है इंडिया का। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया का कौन सा है, राइट, तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आ जाता है इंडिया का, वो है मानस टाइगर रिजर्व। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये असम में है। सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में है, राइट। एंड गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व ये 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व एंड 56वां टाइगर रिजर्व बन गया है इंडिया का, जो कि छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे, विष्णु दियो साई। हेड गवर्नर कौन रहेंगे इनके, रेमन डेका। हेड और इनका कैपिटल कौन सी रहेगी, वो है रायपुर। बार बार हेडक्वार्टर याद आ रहा है मेरे को, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर, और यहाँ पे याद रखेंगे ये गुरु घसीदास टमोर पिंगला को टाइगर रिजर्व हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं मध्य प्रदेश एंड राजस्थान ने एक जॉइंट पैनल कमेटी सेटअप करी चीता प्रोजेक्ट के लिए। ये चीता प्रोजेक्ट क्या है कि मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में जो टाइगर्स, जो चीता हैं, उनका ईजी आवाजाही हो सके, सेफ मूवमेंट हो सके चीतास का, राइट, इसीलिए ये जॉइंट पैनल कमेटी को सेटअप किया गया है, करेक्ट। अगर आपको याद हो 2022 में कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में 8 चीतास को नामीबिया से भी लाया गया था, जहां पे पीएम मोदी ने काफी बड़ा एक इवेंट भी करा था। नेक्स्ट आ जाते हैं कर्नाटका। इन्होंने सेलिब्रेट किया बाली पदियामी फेस्टिवल को। डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखेंगे कि बाली पदियामी फेस्टिवल कहां पे ऑब्जर्व किया गया था, तो ये कर्नाटका में ऑब्जर्व किया गया था। और कब ऑब्जर्व किया गया था, 2 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया था।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन के ऊपर। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें, एनएसओ के द्वारा रिलीज किया गया, एंड इंडिया की जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट है डिक्लाइन टू 6.4% इन सेकंड क्वार्टर। देन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया ग्रीवियंस रिट्रेसल असेसमेंट इंडेक्स 2023 को। अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग, इन्होंने अनवेल किया 4th कोहॉर्ट ऑफ कम्युनिटी इनोवेटर्स फेलोशिप सपोर्टेड बाय केप जेमिनी इंडिया। देन एएम ग्रीन कैकिंडा क्लस्टर जो कि आंध्र प्रदेश में है, इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर को ज्वाइन किया, जहां पे नो या फिर हम बोलें जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की बात की गई। देन रियो मनी ने पार्टनर किया येस बैंक एंड एनपीसीआई के साथ टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड एंड यूपीआई एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च की, ये है एनपीसीआई। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया सेकंड ट्रांच ऑफ $2.5 मिलियन टू यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी करेक्ट पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के लिए। जो पहली ट्रांच थी वो भी $2.5 मिलियन की थी। नेक्स्ट आ जाते हैं जेनवाइज, इन्होंने यूपीआई पेमेंट्स को लॉन्च किया सीनियर सिटीजन्स के साथ विद सिक्योर इंटरफेस। प्रोफेक्टस कैपिटल, इन्होंने $25 मिलियन रेज किए वाया एनसीडी, ताकि एमएसएमईज को यहाँ पे हेल्प की जा सके इनको ग्रो करने में, राइट। देन नॉर्दर्न आर्क, इन्होंने सिक्योर किया $65 मिलियन फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट फंड। कैश फ्री ने एक लॉन्च किया पायलट प्रोजेक्ट, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है ग्लोबल ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर ये पायलट प्रोजेक्ट रहेगा। देन इंडियन इकोनॉमी लाइकली टू ग्रो बाय 6.7% इन FY25 ड्यू टू वीकर सेकंड क्वार्टर परफॉर्मेंस एज पर मॉर्गन स्टैनली। देन जेन फिग्रीडो एंड विटेली पेट्रोव, इनको ऑनर किया गया आईओसी कोचीज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से। तो दोस्तों ये तो थे, लेकिन इसके अलावा और क्या है, वो है 24 कोस्टल विलेजेस जो कि ओडिशा में है, इनको सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया यूनेस्को के द्वारा। सोमालीलैंड के नए प्रेसिडेंट कौन बने, छठे प्रेसिडेंट, वो है डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्लाही। वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे 19 नवंबर। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर। अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे 20 नवंबर। गुरु घसीदास तमोर पिंगला को, ये 56वां टाइगर रिजर्व बन गया इंडिया का, छत्तीसगढ़ में है ये, और ये 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। देन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, इन्होंने जॉइंट पैनल कमेटी सेटअप की चीता प्रोजेक्ट के लिए। एंड कर्नाटका ने सेलिब्रेट किया क्या, बाली पदियामी फेस्टिवल। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पार्ट पर। नेक्स्ट आ जाते हैं किन्होंने अभी F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता, जो कि मोन्जा इटली में हुई थी। तो किसके द्वारा जीती गई है, चार्ल्स लेस्लर के द्वारा जीती गई। चार्ल्स लेस्लर फरारी के लिए ड्राइव करते हैं, राइट। एंड ये इनका सेकंड इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल रहेगा, जो कि 2019 में पहली बार इन्होंने जीता था और अब दूसरी बार 2024 में जीत लिया है। सेकंड पोजीशन पे कौन आए, मैक्लेरन के ऑस्कर पिएस्ट्री, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। देन थर्ड पोजीशन पे आए मैक्लेरन के लैंडो नॉरिस, जो कि यूके से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज रिसेंटली वन द नेशनल चेस चैंपियनशिप हेल्ड इन गुरुग्राम हरियाणा। तो कार्तिक वेंकटरमन, इन्होंने अभी रिसेंटली नेशनल चेस चैंपियनशिप को जीत लिया, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। ये 61st एडिशन था एनुअल नेशनल चेस चैंपियनशिप का, जो कि इंडिया में हुआ। नेक्स्ट, नेम द फुटबॉल क्लब टीम दैट रिसेंटली वन देयर मेडन दुरंत कप एट द 133rd इंडियन ऑयल दुरंत कप, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ। तो उस फुटबॉल क्लब का नाम क्या है, वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। इन्होंने पहली बार दुरंत कप को जीता है। दुरंत कप किससे बिलोंग करता है, कौन से स्पोर्ट से, फुटबॉल से बिलोंग करता है। और इस बार 133rd एडिशन देखने को मिला था, जो कि स्पॉन्सर किया गया था इंडियन ऑयल के द्वारा। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द मैन सिंगल टाइटल एट द यूएस ओपन। मैन सिंगल टाइटल किन्होंने जीता यूएस ओपन में, किनके द्वारा जीता गया, वो है जेनिक सिनर के द्वारा, राइट। मैन सिंगल टाइटल जीता। अगर मैं वीमेन सिंगल टाइटल की बात करूं तो आर्या सेबलंका के द्वारा ये जीता गया। नेक्स्ट, उस इंग्लैंड क्रिकेटर का नाम बताओ जिन्होंने अनाउंस की अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। वो है मोइन अली, ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, राइट। एंड इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया ने कितने मेडल जीते एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स, जहां पे इंडिया की रैंक 18th रही अमंग 170 पार्टिसिपेटिंग नेशंस। तो इंडिया ने 29 मेडल जीते। 29 में से देखें तो 7 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्ज मेडल रहेंगे। नेक्स्ट, द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इन्होंने रिसेंटली इंक्लूड किया योगासना को एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट इन द 2026 के एशियन गेम्स, जो कि शेड्यूल है कहां पर होने के लिए, तो ये जापान में होंगे, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द F1 कतर एयरवेज अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। तो अजरबैजान की ग्रैंड प्रिक्स किन्होंने जीती, ऑस्कर पिएस्ट्री ने जीती। ये मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर हैं। सेकेंड पोजिशन पे आ जाते हैं फरारी के ड्राइवर चार्ल्स लेस्लर। थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं मर्सिडीज के ड्राइवर जॉर्ज रसल। नेक्स्ट,
अभी जेवलिन थ्रो इवेंट हुआ था जहां पे किस जेवलिन थ्रोअर ने सेकंड पोजीशन सिक्योर करी विद 87.86 मीटर एट द 2024 वांडा डायमंड लीग फाइनल्स, जो कि ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ। तो इंडिया के नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे सेकंड फिनिश किया। फर्स्ट किसने फिनिश किया ये आप मुझे होमवर्क में बताओ। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द F1 सिंगापुर एयरलाइंस ग्रैंड प्रिक्स, जो कि मरीना बे स्ट्रीट सर्किट में हुआ इन सिंगापुर। तो किन के द्वारा जीती गई सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स? तो लैंडो नॉरिस के द्वारा जीती गई। लैंडो नॉरिस मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं सेकंड पोजीशन पे कौन थे? मैक्स वर्स्टैपन थे, जो कि रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। एंड थर्ड पोजीशन पर कौन थे? वो थे ऑस्कर पिएस्ट्री, जो कि मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली अभी गोल्ड मेडल जीता इन बोथ ओपन एंड वीमेन सेक्शन ऑफ द 45th फाइट चेस ओलंपियाड, जो कि हंगरी बुदापेस्ट में हुआ। तो इंडिया ने यहाँ पे बोथ ओपन एंड वीमेन्स कैटेगरी में यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 7th एडिशन ऑफ द एनुअल मेंस टेनिस टूर्नामेंट? लेवर कप 2024 का हुआ। लेवर कप आपका टीम यूरोप एंड टीम वर्ल्ड के बीच में खेला जाता है। मेंस टेनिस टूर्नामेंट है। इन दोनों में से किसने जीता ये आप मुझे होमवर्क में बताओ, ठीक है। तो ये 7वां एडिशन था मेंस टेनिस टूर्नामेंट का, लेवर कप का। ये कहां पर देखने को मिला था? तो ये आपका बर्लिन जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली अभी 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप को जीत लिया? इंटरकॉन्टिनेंटल कप ये सीरिया, इंडिया एंड मॉरिशस के द्वारा खेला जाता है, राइट। इन 3 कंट्रीज के द्वारा। ये 4था एडिशन था इंटरकॉन्टिनेंटल कप का, फुटबॉल का इवेंट है ये भी। सीरिया के द्वारा इस बार का 4th एडिशन ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सा ब्रांड ऑफिशियल स्पॉन्सर रहेगा फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 का, जो कि ब्राजील में होगी? तो लेज यहाँ पे ऑफिशियल स्पॉन्सर रहेंगे। लेज आप जानते हैं चिप्स ब्रांड है बहुत बड़ा, तो वो स्पॉन्सर करेंगे फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 को ब्राजील में। नेक्स्ट, उन इंडियन टेनिस प्लेयर का नाम बताओ जिन्होंने मेंस डबल टाइटल जीता अलॉन्ग विद विजय सुंदर प्रशांत इन द फाइनल्स ऑफ एटीपी 2025 ह्वांगझो ओपन 2024 में। तो जीवन जी के द्वारा यहाँ पे अलॉन्ग विद विजय सुंदर प्रशांत के द्वारा ये मिलकर यहाँ पे मेंस डबल टाइटल जीता गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने रिसेंटली अभी गोल्ड मेडल जीता इन द फर्स्ट एशिया पैसिफिक पैडल कप, जो कि बाली इंडोनेशिया में हुआ था। तो पैडल कप किसके द्वारा जीता गया? इंडोनेशिया के द्वारा ही इस पैडल कप को जीता गया है। मार्क करके चलेंगे, राइट। एंड इंडिया ने क्लेम किया दिस, इंडिया हैज क्लेम्ड दिस स्पॉट इन द फर्स्ट एवर टूर्नामेंट अपीयरेंस और ऑल्सो द फर्स्ट एवर पैडल कॉम्पिटिशन जो इंडिया का हुआ था, यहाँ पे याद रखेंगे, राइट। इंडोनेशिया का गोल्ड, फिलीपींस का सिल्वर मेडल था यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सी सिटी होस्ट करेगी 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स? इन्हीं को हम कह सकते हैं 23rd एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कौन होस्ट करेगा 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स को या फिर 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स को? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड। यहीं पे एक और क्वेश्चन बनता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स से 2026 के कुछ स्पोर्ट्स को एलिमिनेट किया गया है, राइट। उन स्पोर्ट्स का नाम बताओ, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो 3-4 होमवर्क हो गए आज के। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स होमवर्क सेक्शन पे। पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी पहला 32 टीम फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 में? दूसरा क्वेश्चन, कौन सी स्टेट होस्ट करेगी 6ठा एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स को, राइट, 2024 में? देन थर्ड, अभी बताओ रिसेंटली किन्होंने 2024 का F1 वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप को जीता? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। डेली बेसिस पे हम बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते हैं, जिससे आपकी रिवीजन हो सके, जिससे आपको चीजें सीखने को मिल सके, राइट। एंड अगर आप हमारी वीडियोस डेली बेसिस पे देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि हम बहुत अच्छा कंटेंट लाते हैं जिससे आपकी हेल्प कर सके। एंड स्टूडेंट्स, जो ये मैं होमवर्क देता हूँ ना, इनको जरूर अटेम्प्ट करा करो। मैं डेली बेसिस पे वीडियो देखता हूँ, सब बच्चों के कमेंट देखता हूँ, जैसे प्रसाना की, गायब थ्रिब, देन एंजॉय ईच मोमेंट, राइट, हिताल शाह, राइट। ये कुछ यूजर नेम है जिनको मैं देखता हूँ डेली बेसिस पे कमेंट करते हैं, जैसे गुलारावी कुमार, देन सिंह श्वेता, राइट, सागर जी, प्रभात जी, राइट। मैं देखता हूँ ये डेली बेसिस पे कमेंट करते हैं, तो ऐसे ही कमेंट करते रहो, आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी एंड बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams.
These handwritten notes are available on Daily Current Affairs Content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description.